Good evening, students. कैसे हो? Am I audible to all of you? Good evening. So, everybody, you have seen the initial session. हमारा session आपने देख लिया है? Hello. तो चलिए, let's talk about nomenclature of the remaining organic compounds. ये मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आवाज़ आनी क्यों बंद हो गई है? हेलो. हाँ चलो मुझे भी सुनाई दे रही है. So let's talk about the nomenclature of the remaining organic compounds, and we are going to start with the chapter on esters. तो हम esters से start करते हैं. Okay. So to begin over with something called the esters. Okay, so esters. ठीक है. एस्टर्स को कभी ऑर्गेनिक सॉल्ट्स कहा जाता था. ठीक है. एस्टर्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स. एंड दैट इज वाई एस्टर्स वर नेम्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स की तरीके से एस्टर की नेमिंग होती थी. क्लियर. दे कंसिडर्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड टू बी द एसिड and they considered the alcohol to be the base. वो बाद में अलग बात है कि when they actually did the mechanism, then it turned out that the carboxylic acid was actually giving the OH and alcohol was giving the H plus. So it turned out to be opposite of what they were thinking. But क्या करें, अब जब हो गया तो हो गया nomenclature, तो उसी हिसाब से हो गया एस्टर्स का. हाँ बेटा हंशिका बोलो. मैंने ये बोला कि एस्टर्स आर कंसिडर्ड द ऑर्गेनिक सॉल्ट्स. दे आर नॉट सॉल्ट्स, दे आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स. ये कोई सॉल्ट्स नहीं है एस्टर्स. सो दे आर ऑर्गेनिक. कंसिडर किया जाता था इनको ऑर्गेनिक सॉल्ट. इज दिस क्लियर? ओके. तो चलिए अब एस्टर्स की नेमिंग की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर्स. Esters are something like R C double bond O O R dash. ठीक है. Where R can be anything as H, alkyl or aryl group. Okay. And R dash could be alkyl, aryl, but not H. If this R dash is H, it's going to become carboxylic acid. So R dash doesn't, it should not be H. It could be any alkyl group, it could be any aryl group. ठीक है. अब एस्टर को आप ऐसे लिख सकते हो. You can write it as RCOOR dash. That is how the ester can be written. Or it can be written as R dash OCOR. समझ में आ रहा है? मैंने उल्टा करके एस्टर बना दिया है. So ester structure could be this. Okay. Now, you need to remember that if we talk about this OR dash, then this part is from alcohol. Okay. And this part is from acid. Clear? Now this alcohol part is named as yl. Alkyl. Phenyl, alkyl, whatever the group is, it is ended with yl. ठीक है. And whatever is this acid part, तो अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना, this acid part needs to be identified and it needs to be named. ठीक है. तो acid part हमारे पास है ic acid, carboxylic acid, oic acid. तो it is ic acid. ठीक है. एंड देन वी हैव द अल्कोहल पार्ट. तो हमारे पास वो वायल पार्ट है. नाउ दिस इक एसिड पार्ट, इसको कर देते हैं O
इसको हम कर देते हैं इक से एट, वॉट एवर इट द नेम ऑफ द एसिड इज, इक एसिड हटाओ और ATE लिख दो। क्लियर? तो आपको एस्टर में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन से अल्कोहल और कौन से एसिड का पार्ट है। ठीक है, अल्कोहल के पार्ट में जो R ग्रुप है उसको तो YL कर दोगे आप, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द नेमिंग ऑफ एस्टर्स, सम सिंपल एस्टर्स वी टॉक अबाउट। सबसे सिंपल एस्टर हमारे पास है HCOOCH3, दिस इज द सिंपलेस्ट एसिड। कॉमन नेम इसका हम कह सकते हैं मिथाइल फॉर्मेट, दैट्स द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं तो दिस पार्ट इज फ्रॉम मीथेनोइक एसिड। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज फ्रॉम मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसका जब नाम की बात आती है तो मिथाइल पहले लिखा जाता है और मिथेनोइक एसिड में इक हटा के हमें 8 लिखना है, तो दिस बिकम्स मीथेनोएट। तो दिस कंपाउंड इज मिथाइल मीथेनोएट। एनीबडी, एनी कंफ्यूजन हियर? Okay, could anybody name this particular compound? Name this compound. That's the common name. अक्षय ठाकुर, लास्ट वाली क्लास वाईटी पर स्टार्टिंग से नहीं है, मे बी वाईटी का कोई ग्लिच होगा, बट आ जाएगी, वो कई बार प्रोसेसिंग में दिक्कत हो जाती है। यस, यहां पे हमारे पास इथेनोइक एसिड है और हमारे पास मिथेनॉल है, तो ये मिथाइल हो जाएगा और इक को 8 कर दो। ठीक है, सो दिस इज मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, चलिए एक कंपाउंड और। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स मैं बना देता हूं। ठीक है, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, इन दोनों का नाम बता दो। Give me the name of both these compounds.
फर्स्ट वन मिथाइल बेंजोएट और दूसरे वाला आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वन दैट यू टेल एंड दिस इज द सेकंड वन. ओके, फर्स्ट वाला आपने बोला मिथाइल बेंजोएट, दूसरे वाला व्हाट हैपेंड? गलत है. फर्स्ट वाला मिथाइल बेंजोएट नहीं है. फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो वो ये बनेगा. ठीक है, दिस पार्ट इज फिनाइल एंड दिस पार्ट इज ethanoate. The name of this compound is phenyl ethanoate. जब हम सेकेंड कंपाउंड की बात करते हैं तो सेकेंड कंपाउंड ये है. ये पार्ट इज फ्रॉम बेंजोइक एसिड. And that is why the second compound is methyl benzoate. The first compound is phenyl ethanoate. The second compound is methyl benzoate. Is this clear? Fine. Okay, let's have another compound. क्या नाम है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टू इथाइल की कोई बात नहीं है एंड दिस इज नॉट एसिटेट. बेटा अक्षय, आप कार्बोक्सिलिक एसिड नेम क्यों नहीं कर रहे हो? तुक्का मार रहे हो. एक सिंपल सी प्रॉब्लम जो आपके साथ है वो ये कि यू डू नॉट वांट टू डू द सॉल्विंग, यू वांट टू लर्न इट और फिर अपने मेमोरी बैंक में ढूंढते हो कि हमने ये कहां पे सॉल्व किया है. नहीं है सॉल्व किया हुआ आपने. बेटा ये एसिटेट है ही नहीं. कुछ भी बोल रहे हो. डाइथाइल एसिटेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. Are you naming the acid or not? Name the acid from which this compound is formed. इसे हटाओ. एसिड कौन सा है?
प्रियांशु, प्रोपेन कहां से आ गया? एक दो तीन चार, चार कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड देन यू से प्रोपेन. प्रियांशु, हाउ डिड यू डू इट? तो आपके पास है ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इथाइल. तो क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा इसका? अगर आप CaCl2 लिखते हो तो क्या इसको कैल्शियम डाइक्लोराइड लिखते हो? नहीं लिखते ना. तो डाइथाइल भी मत लिखना. क्या नाम है इसका? इथाइल ब्यूटेन डाई ओएट. अबे इथाइल इथेनोएट नहीं है अक्षय ठाकुर, ये इथाइल ब्यूटेन डाइओएट है. देखा अक्षय, वेयर यू मेक अ मिस्टेक. आप सॉल्व ही नहीं कर रहे, आप अपने मेमोरी बैंक पे ढूंढ रहे हो कि मैंने कहां पे किया हुआ है. इस कंपाउंड का नाम बताओ. अगर आपको सॉल्व करना पड़ जाए तो बस फिर हवा निकल जाती है. सॉल्व कर रहे हो अक्षय ठाकुर, अगर सॉल्व कर रहे हो तो वो इथेनोएट कहां से आ रहा है आपका? इथाइल इथेनोइक एसिड ही नहीं है जब. मिथाइल प्रोपेन डाइओएट, समझे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल, क्या कर रहा हूं मैं, मिथाइल मैलोनेट. ये मैलोनिक एसिड है, ठीक है. कॉमन कैटेगरी ऑफ दिस कंपाउंड इज मैलोनिक एस्टर. ठीक है. अरे मैंने मेटोनिक एसिड क्यों एस्टर क्यों लिख दिया? मैलोनिक एस्टर. क्लियर. चलो अगला कंपाउंड. नाम. This part is named as phenyl methyl. Phenyl is the side chain of methyl. Commonly it is called benzyl.
and this part is from benzoic acid. What's the name? Phenyl methyl benzoate. अक्षय ठाकुर, आप पता है क्या करते हो? आपको लगता है क्लियर हो गया, आप क्लियर नहीं करते, आप एक नाम और रट्टा मार देते हो। हाँ, ये नाम ऐसा होगा। हाँ बेटा अंशिका बोलो। ऑब्वियसली नहीं समझ में आ रही है बेटा हंशिका। आपने नॉमनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे हमने नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किया था, वो अटेंड किया आपने? हम्म। बेटा यहाँ पे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर नेमिंग की बात करें, एस्टर की नेमिंग में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करनी पड़ रही है। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग अटेंड नहीं की है तो आप एस्टर की नेमिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज इन एस्टर्स वी आर नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, बोलो। लेक्चर तो ऑलरेडी, वो तो यूट्यूब पर, उसमें ग्रुप में क्या डालना है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? चलो, ये है एस्टर की नेमिंग। अब इसके आगे तो सारी की सारी नेमिंग बहुत सिंपल हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे एस्टर के बाद हमारे पास है, अच्छा एस्टर जो है साइड चेन में भी हो सकता है। जैसे कि ये कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड को कॉमन लैंग्वेज में एस्पिरिन कहा जाता है। क्या कोई मुझे इसका आईयूपीसी नेम बता सकता है? एक सिंपल सी बात है कि ये बेंजोइक एसिड है, और ये जो पार्ट है ना, ये, हाँ, the ester part is the side chain here. ठीक है, दिस इज एसिटॉक्सी। एस्पिरिन का आईयूपीसी इज 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड।
क्लियर? सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास ये एस्टर साइड चेन में है, और एस्टर भी नहीं बोल सकते इसको, द अल्काइल नॉक्सी साइड चेन. ठीक है? Okay then. So that's what we have as the naming of the esters. Once we have talked about the naming of the esters, now let's talk about the naming of the acid chlorides. Acid chlorides are C double bond OCl, जिसे आप COCl लिख सकते हो. ठीक है? या फिर आप इसको ClCO भी लिख सकते हो. Anyway, चलता है. तो दीज आर व्हाट वी कॉल एज एसिड क्लोराइड्स. एसिड क्लोराइड को जब हम नाम देते हैं तो इट इज एल्कनॉइल क्लोराइड. ठीक है? या फिर अगर आपको कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकते तो कार्बनॉइल क्लोराइड. अब जैसे कि हमारे पास HCOCl है, दिस कैन बी टर्म्ड एज फॉर्माइल क्लोराइड. अब ये कंपाउंड एज सच स्टेबल नहीं है, सो दैट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, बट स्टिल ये कहीं कहीं पे इंटरमीडिएट के तौर पर दिखाई दे जाता है. तो फॉर्माइल क्लोराइड हैज एग्जिस्टेंस ऑल्दो ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंट. तो यहां पे हमारे पास फॉर्माइल क्लोराइड है, और इसको अगर आईयूपीसी नेम देंगे तो ये आ जाएगा मीथनॉइल क्लोराइड. ठीक है? दिस कंपाउंड CH3COCl is called acetyl chloride. What will be its IUPAC name? And what will be the IUPAC name of this compound? This is ethanol chloride. What will be the name of this compound? बेंजनॉइल नहीं. क्या कर रहे हो बेटा? इसका आईपीसी नेम अगर सिस्टमैटिक नेम लिखोगे तो इसका नाम आएगा बेंजीन कार्बनॉइल क्लोराइड, बिकॉज यू कैन नॉट इंक्लूड द कार्बन इन द चेन. या फिर अगर आप सीधा सीधा नेम लिखना चाहते हो तो दिस इज बेंजो. बेंजो बोला था 7 कार्बन, बेंजोइल क्लोराइड. Is this clear? ये कंपाउंड है बेंजोइल क्लोराइड. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट अमाइड्स. अच्छा, अगर साइड चेन में होता है ना तो इट इज कॉल्ड क्लोरो कार्बोनाइल एज प्रीफिक्स. लेट्स टॉक अबाउट अमाइड्स. अमाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है C double bond ON AB. Now AB could be alkyl groups, could be other groups also. Now इसके अंदर नाम अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है अल्कनामाइड, यानी कि इट इज समथिंग लाइक अमाइड. ठीक है? या फिर कार्बोनाइल
कार्बामाइड। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास है HCONH2, दिस कंपाउंड इज फॉर्मामाइड। ठीक है, IUPAC में ये कहलाएगा मीथनामाइड। ठीक है, कैन एनीबडी गिव मी द नेम ऑफ HCONHCH3? NCOCHCH3, NCONHCH3। नहीं, आपने दो कार्बन कैसे मान लिए? क्या कार्बन कार्बन से लिंक्ड है? इथेनामाइड तो ये हरगिज नहीं है। हाँ, ये मिथेनामाइड है। इंपॉर्टेंट बात ये कि ये CH3 इज अटैच टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास है तो ये मिथेनामाइड, in which one of the hydrogen has been substituted by methyl on nitrogen. So this is actually on nitrogen we have methyl, N-methyl methenamide. ठीक है, कॉमनली इसे कहा जाता है मिथाइल फॉर्मामाइड, ये कॉमन नेम है इसका। ठीक है, could anybody give me the name of this compound? This is also methenamide. बेटा ये वाला पार्ट तो वही है, ये वाला पार्ट तो वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो पार्ट आया था वो तो सेम ही है, वो थोड़ी ना चेंज हुआ है। यस, इट इज N, डाई मिथाइल मीथनामाइड। ठीक है, इसे एक्चुअली कॉमनली बोला जाता है, हाँ बोला अंशिका। हमारे पास स्ट्रक्चर ये है, now this part is methenamide. This part is methenamide and CH3 are substituent on nitrogen. ठीक है, Hanshika, is it clear now? Is that clear? So this is nitrogen methyl यानी कि NN dimethyl methenamide. Okay, so N here इसमें ये NN are the locants, which gives us the position of the side chain. This side chain is attached to nitrogen. इसका एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म DMF है, डायमिथाइल फॉर्मामाइड। तो DMF कई बार लिखा होता है, तो दिस इज यूज्ड एज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें प्रोटॉन नहीं रिलीज होते, ये एसिड या बेस की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, ओके, लेट्स हैव दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम इज
acetanilide. Name it. नेम दिस कंपाउंड और स्ट्रक्चर बना लेना, नाम आ जाएगा. Right. This is N-phenyl ethanamide because this is CH3, C double bond O, NH, and here it is benzene. This part is phenyl. It is a side chain on the nitrogen. So this is N-phenyl and this is ethanamide. Clear? This is acetanilide. अक्षय ठाकुर एसिटामाइड नहीं बोलते बेटा, इथेनामाइड बोलते हैं. बेटा वो स्पेलिंग एरर नहीं है, वो एरर है, एंड दैट एरर इज गोइंग टू कॉस्ट यू मार्क्स. Okay, so that's what we have as amides. Clear? अमाइड्स की बात करके अब हम आते हैं नॉन एसिड डेरिवेटिव्स में. लेट्स से वी टॉक अबाउट नाइट्राइल. नाइट्राइल की जब हम बात करते हैं तो नाइट्राइल आर ऑल्सो कॉल्ड सायनाइड्स. ठीक है. ओके, एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय दिस CN. ओके, इट इज साइनाइड. साइड चेन में दे आर कॉल्ड कार्बो और दे आर कॉल्ड नाइट्राइल. इनकी जो नेम आता है, या तो इसको नाइट्राइल लिखते हैं या फिर कार्बोनाइट्राइल. ठीक है. नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, HCN इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इस कंपाउंड को हम नेम देते हैं हाइड्रोजन
सायानाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड या फिर हाइड्रो सायानिक एसिड. तो दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोसायनिक एसिड. Clear? So that is hydrocyanic acid. Okay, fine. CH3CN. This is called methyl cyanide. This is called methyl cyanide. ठीक है. Any confusions? कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके. इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा? Am I not audible on YouTube? Why should I not be audible in YouTube? Am I not audible on YouTube? I'm perfectly audible. कोई दिक्कत नहीं है. साइनोमेथाइल. It is, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है. So this is ethane nitrile. This is ethane nitrile. क्लियर? मिथाइल साइनाइड इज इथेन नाइट्राइल. और ये एक बात बहुत दिक्कत आती है साइनाइड के साथ, नाइट्राइल्स के साथ. दैट इज, यहां पे कॉमन नेम और आईयूपीसी नेम की वर्ड रूट डिफरेंट हो जाती है. और यही बात है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है. बहुत बार ये कहते हैं टू प्रोड्यूस इथेनोइक एसिड, द नाइट्राइल विच द साइनाइड विच नीड्स टू बी हाइड्रोलाइज्ड इज इथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड. द आंसर इज मिथाइल साइनाइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो इथेनोइक एसिड मिलेगा, क्योंकि मिथाइल साइनाइड में 2 कार्बन. मिथाइल सेज 1 कार्बन एंड साइनाइड सेज अनदर कार्बन. Is this clear? है 2 में से पूजा क्लास चल रही है और मुझे से बोलना पड़ेगा. हंशिका, अपना माइक ऑफ रखो बेटा, पता है आपकी क्लास चल रही है. ठीक है? क्लियर? सो दैट्स व्हाट वी हैव एज मिथाइल साइनाइड एंड दिस इज हाउ वी नेम द नाइट्राइल. इसका नाम दे सकते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड?
What's the name of this compound? Cyanobenzene. Cyanobenzene कह सकते हो, but the better name is benzonitrile. ठीक है, या फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल. ठीक है, दिस इज बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल. ठीक है, so that was the nitrile. सर एनसीईआरटी टेबल में सफिक्स दिया हुआ है नाइट्राइल और प्रेफिक्स है साइनो, तो Perfect. कब कौन सा यूज करना है वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो मेन चेन वही है ना, यहाँ पे तो कोई और फंक्शनल ग्रुप है नहीं जो ये साइड चेन में यूज करें, तो इसी को तो मेन चेन में यूज करना पड़ेगा नन्या. ठीक है, सो दैट इज वाई हियर यू हैव टू यूज नाइट्राइल. चलिए, नाइट्राइल के बाद अब हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइड्स. ओके, एल्डिहाइड्स के अंदर इट इज CHO. हेयर इट इज एनी ऑफ द ग्रुप, R हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. CHO हमारे पास आ गया. तो नाउ दिस कंपाउंड इज ईदर अल और aldehyde, or rather I should say carbaldehyde. ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास CHO है, HCHO, यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं तो दिस कंपाउंड इज formaldehyde, and IUPAC it is methanol. मिथानेल और मिथानल. ठीक है, and this is CH3CHO which is called acetaldehyde. Okay, and that's what we call as इथेनॉल. ethanol. Ethanol. And this particular compound, what would be its name? ऑक्सोहेक्सेन. Mm-hmm. ऑक्सोबेंजीन. Nahi. Ananya, why do you make the functional group side chain? Functional group है ये. Why do you want to make it a side chain? सर बेंजाल्डिहाइड. बेटा अगर आपका इसका बेंजल्डी कॉमन नेम बोलोगे और एक्सेप्टेड IUPAC नेम ऑल्सो, इट इज बेंजाल्डिहाइड. But if you talk about a systematic name, it would be benzene carbaldehyde. It is going to be benzene carbaldehyde. ठीक है, benzaldehyde is benzene carbaldehyde. Any confusions here? Fine. No sir. That's benzene carbaldehyde, benzaldehyde. ठीक है, and then we can have something others also. अच्छा, when it is in the side chain, it is termed as side chain. It is formyl, or it is also called aldo.
फॉर्माइल या फिर एल्डो, ठीक है। अच्छा, इसे ऑक्सो भी कहा जा सकता है, लेकिन ये ऑक्सो ना एक एनसीईआरटी में हम्म एनसीईआरटी में ऑक्सो भी दिया हुआ है। हाँ, लेकिन ऑक्सो में ना एक ट्रिक है, ऑक्सो में एक पंगा है, ठीक है। अब देखो पंगा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। चलिए इसका नाम बताइए। अगर आप इसे साइड चेन लेते हो तो यू विल कॉल इट एज एल्डो और फॉर्माइल, ठीक है। नाउ द नेम वुड बी 1 2 3 4 4 एल्डो प्रोपनोइक एसिड, ठीक है। इट वुड बी 4 फॉर्माइल प्रोपनोइक acid because aldo and formyl include the carbon. On the other hand, अगर आप इसको ऑक्सो नेम देते हो ना, और सॉरी गलत बोल रहा हूं, मैं गलत लिख रहा हूं, इट शुड बी 3 aldo 3 formyl propanoic acid. But on the other hand, if I talk about ऑक्सो, ऑक्सो की बात अगर करोगे तो ये पोजीशन 4 हो जाएगी, और ये पोजीशन अगर 4 हो गई देन इन दैट केस दिस इज ऑक्सो। ऑक्सो ये है, दिस इज ऑक्सो, कार्बन नहीं होता ऑक्सो में, तो इट इज गोइंग टू बी 4 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। सर एक बार और बता दीजिए। बेटा इफ यू टॉक अबाउट एल्डो, एल्डो इंक्लूड्स द कार्बन, तो आपके मेन चेन में एक कार्बन कम हो जाएगा। फॉर्माइल इंक्लूड्स द कार्बन, तो एक कार्बन कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑक्सो यूज करते हो तो देयर विल बी 1 कार्बन मोर, ठीक है। तो ऑक्सो यूज करते हो तो ब्यूटानोइक एसिड है, फॉर्माइल या एल्डो यूज करते हो तो प्रोपनोइक एसिड है। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप क्या यूज कर रहे हो। ऑक्सो में कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, फॉर्माइल एल्डो में कार्बन इंक्लूडेड है। ओके सर। समझ में आ गया डिफरेंस? सर प्रेफिक्स एंड सफिक्स में कंफ्यूजन हो रहा है। अनन्या, योर नेम इज मिस अनन्या सरकार, ठीक है। क्लियर? विल यू Yes, एवर sir. राइट इट सरकार अनन्या मिस? एनसीईआरटी टेबल में जैसे दिया हुआ है ना, तो मतलब नहीं हो पा रहा वैसे। क्यों नहीं हो रहा, बताओ किस में कंफ्यूजन है? जैसे दो फंक्शनल ग्रुप जब दिया रहता है तब प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स का अलग नेम है, सफिक्स का अलग नेम दिया अनन्या, हुआ है। what was the name of your mother before marriage? What was the name of your mother before marriage? रॉय था, अभी सरकार हो गया है। रॉय, ठीक है। यस सर। तो देर वॉज समथिंग रॉय, ठीक है। योर फादर नेम इज समथिंग सरकार, okay. So you had two functional group to choose from, Roy and Sarkar. Was there a debate in it? Your father's name got the priority, clear? So you became सर Ananya इसी में Sarkar. डाउट है कि कौन सा यूज करना है, बेटा क्योंकि प्रायोरिटी दो लिस्ट हमने की थी, पूरी प्रायोरिटी लिस्ट आपको बताई थी पिछली क्लास में। याद नहीं है? पूरी की पूरी प्रायोरिटी लिस्ट लिखवाई थी आपको। यस सर तो फिर 11 प्रॉब्लम नहीं कहाँ है? अरे 11th नहीं, आज की सुबह की क्लास में लिखवाई थी। ये रही पूरी की पूरी प्रायोरिटी लिस्ट। सर। डिड यू नॉट कॉपी इट? ये सर कॉपीड। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो नहीं पूरी प्रायोरिटी लिस्ट। सो व्हाई शुड देयर बी अ कंफ्यूजन कि किसको प्रायोरिटी देनी है?
जिसकी प्रायोरिटी है दैट विल बी एज अ सफिक्स, बाकी सारे के सारे प्रीफिक्स में जाएंगे. यस सर, क्लियर ना. अनन्या, इसमें कंफ्यूजन था ही क्यों? अक्षय ठाकुर, बेटा मैंने गूगल मीट का रिकॉर्ड ही नहीं किया था, मैं डालूंगा कैसे? आई डोंट रिकॉर्ड द गूगल मीट. ठीक है. और आज सुबह वाला सेशन आई थिंक इट इज देयर. यस सर. कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए. नहीं बेटा, अक्षय पूरा का पूरा 1 आवर 16 मिनट का सेशन है यहाँ पे. चेक इट आउट, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार रिफ्रेश करके फिर चलाओ, हो जाएगा. अब नहीं है, होगा था, अब नहीं है. ओके फाइन. सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द नेम. क्लियर? तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में भी कोई दिक्कत नहीं है. Clear? So that's what we have just talked about the priority. Now, once having talked about the priority, we have just talked about the aldehydes and other compounds. Now let's talk about the ketone. Ketone for our change terminal नहीं होता. It is somewhere in between. ठीक है. तो यहां पर हमारे पास जो इसका नेम है वो ओन आता है. एंड व्हेन इट इज इन साइड चेन तो इट इज ईदर ऑक्सो और कीटो. कीटो भी बोलते हैं, ऑक्सो भी बोलते हैं. फाइन. अब द सिंपलेस्ट कीटोन इज CH3COCH3. नाउ दिस कंपाउंड हैज अ कॉमन नेम ऑफ एसीटोन. IUPAC, दिस इज प्रोपेनोन. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि IUPAC में एसीटोन नेम ऑल्सो इज कंसिडर्ड. इट इज एक्सेप्टेड. वो हम बोलते नहीं है. वी टॉक अबाउट प्रोपेनोन ओनली. वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक नेम. सिस्टमैटिक नेम इज प्रोपेनोन, बट IUPAC एक्सेप्टेड नेम और ट्रिवियल नेम इज एसीटोन. इज दिस क्लियर? ओके. नाउ let's talk about this compound. CH3C double bond O, CH2C double bond O, CH3. This is, the common name is acetyl acetone. This compound commonly is called acetyl acetone. What would be its IUPAC name? This is acetyl acetone. What is its IUPAC name? Sir, Yes. Xintone. pentadione. क्या? पेंटा क्यों? पेंटेन आएगा ना. Pentadione. 1 2 3 4 5. So this is पेंटेन. और नंबरिंग क्यों नहीं करोगे भाई? 2 4 डाइओन. Ione. पेंटेन Yes, sir. 2 4 डाइओन. एसिटाइल एसीटोन. ठीक है. चलो इस कंपाउंड का नाम बताओ.
Commonly, this compound is called ethyl acetoacetate. ये कॉमन नेम है इसका. IUPAC नेम क्या होगा? I have already given you the hint. What would be its IUPAC name? नाम. सर इथाइल तो लास्ट में हो जाएगा. इथाइल स्टार्टिंग में होगा बेटा, लास्ट में नहीं. Ethyl is in starting, not last. इथाइल पेंटेन 3,5 डायोन. First of all, this compound is an ester. एस्टर की प्रायोरिटी कीटोन से ज़्यादा है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा इथाइल. ठीक है, अब यहां पर ये साइड चेन है. दिस वन इज द साइड चेन. 1 2 3 4 3 ऑक्सो ब्यूटानोएट. समझ में आया? स्टूडेंट सोचते हैं नॉमेनक्लेचर सबसे आसान चीज है, क्या करना है इसको, क्यों करें, छोड़ो करें. वाई शुड वी डू नॉमेनक्लेचर अ लिटिल बिट मोर. नॉमेनक्लेचर सबसे डिफिकल्ट है बेटा. ठीक है, so this is the compound ethyl 3-oxobutanoate. this is what we have as ketone. चलिए इस कंपाउंड का नाम दो. इस कंपाउंड का कॉमन नेम इज एसिटोफिनोन. दिस कंपाउंड इज एसिटोफिनोन. आईयूपीसी नेम क्या होगा?
कोई प्रॉब्लम? इथाइल ऑक्सोबेंजीन। नहीं, ऑक्सो क्यों, मेन चेन है, साइड चेन थोड़ी ना है। इसका क्या नाम होगा? दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। सर ये पीवाई क्यों में आया? हाँ तो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। दिस कंपाउंड इज 1,1 बिसफिनाइल। फिनाइल के साथ डाई वर्ड यूज नहीं होता क्योंकि डायफिनाइल इज समथिंग एल्स। बिस बिस 1,1 बिसफिनाइल मीथनोन। दैट्स व्हाट वी हैव एज एसिटोफिनोन। यहाँ पे दोनों फिनाइल ग्रुप साइड चेन में काउंट हो जाती हैं। है ये कीटोन ही। सर फर्स्ट स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम? ये तो रहा 1,फिनाइल इथनोन। हम्म, सर एसिडोफिनॉल लिखे उसका आईयूपीएसी नेम? ये तो रहा एसिटोफिनोन का आईयूपीएसी नेम। कोई कंफ्यूजन? And then we go on to alcohols. Alcohols, OH. Main chain, they are OL. Side chain, they are hydroxy. ठीक है? अच्छा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? सर फिनॉल। Yes, it's phenol. But remember, it can also be called as benzenol. बेंजोल मत लिखना, बेंजाइल अल्कोहल मत लिखना, इट इज बेंजीनॉल। बेंजाइल अल्कोहल का क्या स्ट्रक्चर होगा, कोई बता सकता है? ध्यान रखना, बेंजाइल ग्रुप इज नॉट बेंजीन, बेंजाइल ग्रुप इज दिस, और बेंजाइल अल्कोहल इज दिस। यस सर। ठीक है, क्लियर? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर सीधा सीधा ग्लाइकॉल। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, व्हेन वी हैव द OH ग्रुप ऑन द एडजेसेंट कार्बन्स, दिस इज कॉल्ड विसिनल डायॉल। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पर अगर ग्रुप है तो उसे विसिनल बोला जाता है। अगर एक ही कार्बन पर हो तो दैट इज कॉल्ड जेमिनल। नाउ दिस इज विसिनल। नाम दो इसका। इथेन डायोल। इथेन 1,2 डायऑल।
अल्कोहल के साथ नंबरिंग करना जरूरी हो जाता है एक्सेप्ट व्हेन वी हैव ओनली वन कार्बन, क्योंकि OH कहीं पर भी हो सकता है. पूनम सिंह, इट इज नॉट C6H6OH, इट इज C2H4OH होल ट्वाइस, या फिर C6H5OH होता है, C6H6OH नहीं होगा. ठीक है. ग्लाइकॉल इज इथिलीन ग्लाइकॉल, वो तो है ही है, इसका नाम ग्लाइकॉल है. अब इसी तरीके से इसका नाम ग्लिसरॉल है. ग्लिसरॉल बोल दो, ग्लिसरीन बोल दो, इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन. प्रोपेन. आगे? प्रोपेनोल। प्रोपेनोल तो ठीक है, बाकी 3 OH है, उनको भी तो नाम दोगे? सर ट्राई और 1 2 3 तो कैसे नाम लेंगे? दोनों डालोगे ना. दिस इज ग्लिसरॉल, which is also called glycerine. Now that's propane. 1 2 3. Try all. सर ट्राई और. Propane 1 2 3. Try all. That is what we have as glycerol. ठीक है. Now this compound is called resorcinol. क्या नाम होगा इसका UPSC? पूनम सिंह, ट्राई हाइड्रियल नहीं होता बेटा, ऑल होता है, ट्राई ऑल. ठीक है, साइड चेन में हाइड्रोक्सी होता है. बेंजीन 1,3-डाइऑल। जी, बेंजीन 1,3-डाइऑल. इसका क्या नाम होगा? Now this compound has a common name of salicylaldehyde. वन हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सोबेंजीन. ऑक्सो? बेटा सबको साइड चेन में क्यों डाल रहे हो? दिस मेक्स इट बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. ठीक है. इसका क्या नाम होगा? नेम इट.
Sir, हाँ 2 जी. carboxylic aldehyde. अरे यार, 2 कार्बोक्सिलिक मेन चेन में क्या है? ये मेन चेन है. साइड में लिख दिया तो साइड चेन होगी क्या? टू Sir, हाइड्रोक्सी 1,2 टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. 1,2 डाइहाइड्रोक्सी कहां से हो गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड है. दिस इज व्हाट वी हैव एज सैलिसाइलिक एसिड. ठीक है. This is what we have as the salicylic acid. Okay? चलिए अब अमीन्स की बात करें. अमीन में हमारे पास एन एन होता है एंड दैट्स अमीन. साइड चेन इट्स अमीनो. ठीक है. अब जैसे कि द सिंपलेस्ट वुड बी CH3NH2. नाउ दिस इज मीथनामाइन. कॉमन नेम इज मिथाइलामीन. Okay, like CH3CH2NH2, it will be ethanamine. The side chain, the common name would be, then we could have something like CH3NHCH3. अब इनमें से एक को साइड चेन लेना पड़ेगा. बोथ आर इक्वल, सो एनी ऑफ दीज कैन बी टेकन एज अ साइड चेन. तो इट इज गोइंग टू बी एन मिथाइल methanamine. N methyl methanamine, or you can say dimethylamine. ठीक है. CH3NCH3CH3, क्या नाम है इसका? कॉमन नेम वुड बी ट्राइमिथाइलामीन. IUPAC क्या होगा? Sir, N, N dimethyl methanamine. यस. क्लियर? And then we could have something like this. इसका कॉमन नेम इज एनिलीन. What will be its IUPAC name? Systematic name would be, but this is what we use. ठीक है. Okay, sir. Fine. So that's what we have as aniline, that's what we have as amino, that's what we have. अच्छा चलो इस कंपाउंड का नाम बता दो. Common name is
glycine. Actually accepted. But what's the IUPAC name? Systematic name. The name would be 2-amino. Two-amino ethanoic acid. Clear? So that's what we have as the nomenclature of organic compounds. Anyone has to ask anything here? बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे जिसका nomenclature. प्रायोरिटी लिस्ट ज्यादा रहेगा उसका प्रीफिक्स लेना है, जिसका कम उसका सफिक्स लेना है. जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी उसका सफिक्स लेना है. ठीक है? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो सरनेम बन जाता है ना? तो सरनेम इज अ सफिक्स, इजंट इट? सर एक एराइल एलाइल पोजीशन वो वाला कौन? करेंगे बेटा, जैसे जैसे करते चले जाएंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. ओके सर. ठीक है? ओके, अल्फा बीटा गामा भी तो बताना है, अराइल अलाइल सब बताना है, सारे का सारा जैसे जैसे आता चला जाएगा. वी आर गोइंग टू डू इट. ओके सर. ठीक है? अभी एक साथ सारा करेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी में आ जाएगी. ठीक है? एनीथिंग यू हैव टू आस्क? नो सर. No, sir. ओके देन, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहो. इज इट क्लियर? बाय बाय. थैंक यू सर. गुड थैंक नाइट. यू सर. नॉमेनक्लेचर ठीक से याद कर लेना जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आगे करें तो आइसोमेरिज्म कर सकें. बाय बाय.